Okay. I think the last lecture we had done a problem. Yes. The last lecture we had done the journal entries for this particular problem, if I'm not wrong. Problem number 7. They are asked to pass the journal entries. We are done with the entries. Now we are told to prepare the ledger accounts. We are supposed to prepare two accounts. One is Gemini trading account and one is foreign exchange account in the books of Marina Limited. This is basically only the posting that we are supposed to do. So let's try to work it out. It's not that difficult कि नहीं कर सकते. It's quite easy. To look carefully at the journal entries. You have the entries with you. I will first make the ledger account. I will first make the ledger account and then I will go to the I will first make the ledger account of Gemini Trading Company. We are supposed to make two ledger accounts here. One is Gemini Trading Company and one is the foreign exchange fluctuation account. I'll just try to make this account of Gemini Trading Company. I won't make the whole of the format, date, particulars, journal, folion, rupees, debit and credit side. I'll lightly make the account. I hope you know the format. Okay. This is my Gemini Trading Company account. In the first entry, we have credited Gemini Trading Company. Entry will be on the credit side. Entry will be on the credit side. 1st Jan 2014. I purchases and the amount will be the amount will be 1,22,50,000. ये आपका पहला एंट्री आ गया ऑन द क्रेडिट साइड. सेकेंड एंट्री में हमने उसको डेबिट किया है 10th Feb. सेकेंड एंट्री विल बी ऑन द डेबिट साइड 10th Feb 2014. यहाँ पे दो एंट्रीज आएगा. एक टू बैंक पेमेंट. हाउ मच वाज द पेमेंट? 49,50,000. And then in the third entry we have again credited Gemini Trading Company. On the credit side we will have on 10th Feb 2014 by foreign exchange fluctuation account. Amount will be 50,000. एंट्रीज आप लोग के पास है? एक मिनट. Limited space here.
This is okay now. Font. I will look at the first entry now. Yes. This is my first entry, purchases to Gemini Trading Company. So here my heading will be Gemini Trading Company account. On the credit side, the date is 1st Jan 2014. 1st Jan 2014. Entry will be buy purchases and amount will be 1,22,50,000. सेकेंड एंट्री में आपने 10th Feb को जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट किया है. सो 10th Feb 2014 to bank account 49,50,000. And third entry 10th Feb Gemini trading account is credited and foreign exchange fluctuation is debited. 10th Feb 2014 by foreign exchange fluctuation account पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, नो शॉर्टकट्स. 50,000. डाउट है? नेक्स्ट 15th March we have again debited Gemini trading company by how much? What is the amount here? Amount $71 into 47.6. What is the amount? 35,70,000. 35,70,000. 15th March to bank account 35,70,000. नेक्स्ट एंट्री में आपने प्रॉफिट बुक किया है 15th March को, तो अगेन इट विल बी 15th March 2014 to foreign exchange fluctuation account, and amount is this one, 1,05,000. Now comes 31st March. Look here now. Look here. This is the entry which I want to explain. 31st March, there is a profit on revaluation. We have debited Gemini Trading Company account on 31st March 2014 to foreign exchange fluctuation account. Amount will be 3 lakhs, this one. I'll take 3 lakhs here. Now we need to close the books of accounts on 31st March. Because 31st March is my closing date. On 31st March, I will do the totaling on both the sides. On the credit side, I have the total 1,23 lakhs. On the debit side, I have the total 89,25,000. Here we have 89,25,000. Here we have 1,23 lakhs. Subtract them and get the balance on 31st March 2014. To balance carried down. The difference between 12,30,000 and 89,25,000. Account tallied. Done? समझा? Doubt है किसी को? Any doubts? Now 1st April 2014. Again the balance will be carried forward. To balance brought down. Now these are the $75,000 that are outstanding.
which we had valued at what price? 31st मार्च का रेट क्या था देखो ऊपर क्वेश्चन में, तो 45 रुपीज था। यहाँ पर हम लोग लेंगे $75,000 multiplied by 45. I can write the same thing here also. Closing balance $75,000 at 45 rupees. We have valued the closing balance of foreign currencies $75,000 at closing rate. This comes to 33,75,000. Last payment was made on 20th April, if I am not wrong. On 20th April, we made the last payment. उसका interest pending है. 20th April, there was a rate was 46.75. This is the rate. I will make payment at 46.75 to bank. Let us pay $75,000. $75,000 multiplied by 46.75. वही रेट है ना? हाँ, तो यहाँ पर आएगा बच्चा लोग आपका $75,000 multiplied by 46.75, 35,06,250. As per the opening balance, I had to pay how much? $75,000 at what rate? 45. But we made the payment at 46.75. We paid 1.75 rupees more. ज्यादा पे किया तो नुकसान है। नुकसान है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कंसर्न पार्टी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। So I'll pass the entry on the credit side on 20th April. By foreign exchange fluctuation account, $75,000 multiplied by the difference, 1.75 का difference. And now if you do the totaling of both the sides, here we have 35,06,250. Here we have 131,250 plus 33,75. It will automatically tally. This is my closing of the books of accounts of Exchnage Trading Company because the account has been settled completely. पूरा payment आ गया boss. Any questions still here? We have not done anything new. We have simply posted the entries in the ledger account and closed the account. This was the Gemini Trading Company account. Shoot now, all of you, fast. बना लो इसको. Then I will make the other account. Then I will make the other account. Any queries? Let me know. Font size is okay. I have told you very clearly. Sit on the front, not on the back. Should pass, all of you. Do it fast.
All of you done? So now come to the next account now. The second account is the foreign exchange fluctuation account. Foreign exchange fluctuation account. Yes. In this account, I'll give exactly the effect of foreign exchange fluctuation using this first account. ये पहले account को देख के हम लोग second account बनाएंगे. If you look carefully on the credit side, we have here credited the Gemini Trading Company account. इसका second effect FEF account में आएगा डेबिट साइड में 10th Feb. To Gemini Trading Company account. Amount is, what is the amount there? 50,000. Next, on the debit side, we have 3 entries. This is 1 and 2. 2 entries there on the debit side. उनका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे 15th March 2014 बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखो 1,05,000 and again 31st March by Gemini Trading Company account 3 lakh rupees. Now 31st March I am going to close this account. Foreign exchange fluctuation account is a nominal account. At the end of the year, nominal account is always closed and the balance in foreign exchange fluctuation account will be transferred to P&L account. So on the credit side, we have 4 lakh 5. On the debit side, we have only 50,000. So balancing figure will be 2. This is called as the transfer entry, if you remember, to profit and loss account. This is called as the transfer entry. Amount will be 4,05,000 minus 50,000. 4,05,000 minus 50 will be 3,55,000. यहाँ पे आपका टोटल अभी चेंज हो जाएगा. It will be 4,05,000. 1 year is closed. Next year again we made one more payment. ये रहा वो payment. $75,000 at 46.75. वहां पे आपको लॉस हुआ 131,250. Show that loss on the debit side of foreign exchange fluctuation account. To Gemini Trading Company account. How much was the loss? 131,250. Again, that loss will be transferred to profit and loss account at the end of the year. At the end of the year, मतलब 31st March 2015. An account will tally. We have closed the books of accounts. हमने foreign exchange fluctuation account close कर दिया. Any questions here? Any doubts? All clear? Shoot now, fast. One of the student has a doubt, sir. We need to pass the journal entries in this column number 12.
and then only we can make the ledger account. Now the trick here is to make the ledger account even without passing the journal entries. How will I make the ledger account without passing the journal entries? That is what we are supposed to learn right now. Problem has asked to prepare the pass the journal entries, but I won't. Let's try this one now. Sum number 12. कौन सा बोला? हमने 11 बोला. We're doing sum number 11. Making the ledger account without passing the journal entries is what we are supposed to learn. Trust me, that is the easiest way out to solve the sum actually. So here is the question on the left hand side. Solution on the right hand side. That is the trademark I followed in the whole of the lockdown. Even if you are sitting in a car, you can always attend the lecture without the notes. All my online sessions, I kept the question on the left, solution on the right side. So here is the question on the left side. Pass journal entries for the following foreign transactions in the books of Deepali Limited. They have asked the journal entries, but I am not passing the journal entries. I am making the account in the books of Deepali Limited. So Deepali Limited have imported a machinery, imported some goods worth $42,500 from Palm Trading Company. Please put your pens down, please. मैं पढ़ के आया कैसे मुझे भी थोड़ा पढ़ाने दो. तब तुम करेगा तो मैं क्या करेगा? I am making the ledger account even without passing the journal entries. It's quite possible. It's perfectly possible. Here is my date, particulars, journal folio, and rupees. And same thing I am following on the credit side as well. You can refer the question from your own notes. It is not visible here. I can't really help. First entry is Deepali Limited imported goods worth $42,500. So you are buying the goods from whom? Palm Trading Company. ये आपका supplier हो गया. When the goods are purchased, supplier account is created. So date will be here 1st Jan 2012. Amount will be by ये मेरा कौन सा अकाउंट है? Hold on. ये मेरा टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट है. अभी टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट यहां पर आएगा बाय परचेजेस. ब्रैकेट में हम रेट लिखेंगे $42,500 multiplied by what is the rate on 1st Jan when the goods are purchased? 48.5. Well, multiply this 42,500 multiplied by 48.5. Now the first payment was done on 15th of Jan. कर दो payment भाई. Payment करेंगे तो debit side से payment होगा. Whenever the payment is made, bank account is credited.
Supplier account will be debited. Okay. What's the date? 15th Jan 2012. 15th Jan 2012. Entry will be to bank account, and amount will be $8,000 multiplied by, what is the rate on 15th of Jan? So 49.25. So 49.25 into 8,000. It comes to 3,94,000. सर जब बाय किया तब क्या रेट था? 48.5. जब पेमेंट किया तब क्या रेट है? 49.25. 0.75 पैसा ज्यादा पे किया तो फायदे का नुकसान है. अच्छा, लॉस विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. एंड कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? पार्टी अकाउंट, मतलब टॉम ट्रेडिंग कंपनी. तो टॉम ट्रेडिंग कंपनी में एंट्री कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? नहीं समझता है? दूसरा रूल याद रखो. दूसरा तरीका समझने का ऐसा है, चेक द रेट्स हियर. ओके, इफ यू चेक द रेट्स हियर, यहाँ पे आपका रेट था 49.25. यहाँ पे आपका रेट क्या? ट्रांजैक्शन डे का. बैलेंसिंग कौन साइड में आता है? डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आएगा. तो मेरा एंट्री आएगा क्रेडिट साइड में ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज 15th Jan 2012 बाय फॉरेन एक्सचेंज. पूरा लिखना है आपको एग्जाम में. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. Bear me for the spelling errors. And amount will be, sir, $8,000 पे किया तो उसी के ऊपर डिफरेंस निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय 0.75. It will be 8,000 multiplied by 0.75, 6,000 rupees. Done with the first transaction. पेमेंट का एंट्री किया, प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया. अगेन सेम पैटर्न विल फॉलो ऑन 15th of Feb. सेकंड पेमेंट to bank. How much is the payment? $9,000 multiplied by, sir, 15th Feb का रेट क्या है? 48.25. कर दो पेमेंट. 9,000 multiplied by 48.25. सर जब पेमेंट किया तब रेट था 48.25. जब हमने बाय किया तब क्या रेट था? तो सर 25 पैसे का फायदा हुआ. कम पे किया उतना फायदा हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. और पार्टी अकाउंट मतलब टॉम अकाउंट डेबिट. तो एंट्री विल बी ऑन द डेबिट साइड. 2 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. अमाउंट विल बी $9,000 पे कितने का फायदा हुआ? 0.25 का बेनिफिट. 9,000 multiplied by 0.25. Second entry done. Third entry is on 15th of March. We paid $14,500 to bank. How many dollars? $14,500 multiplied by, what is the rate on 15th of March? Sir, 48.40. 14,500 multiplied by 48.40 will be 7,01,800. बस जब बाय किया तब क्या रेट था? 48.5. जब पे किया तब क्या रेट है? 48.4. 10 पैसा कम पे किया. फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है. तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होगा, टॉम अकाउंट डेबिट होगा. समझ में आ रहा है? बायट नहीं चलो कुछ भी बायट करने, आई कैन टीच दैट एज वेल. मैं सिंपली बोल देगा, हाँ प्रॉफिट हुआ तो पार्टी अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो पार्टी अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा. आई कैन टीच दैट वे ऑल्सो. I can teach that way also. I don't want to. यहाँ पे आपका एंट्री आएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. $14,500 multiplied by 10 paisa, that is 0.10. That comes to 1450. Now comes the most important part. Look here. बिना जर्नल एंट्रीज के अगर आप लेटर अकाउंट बना रहे हो, बिना जर्नलिस्ट के अगर आप लेटर अकाउंट बना रहे हो, तो हाउ टू वर्क आउट द नेक्स्ट पार्ट 31st March? टेल मी,
out of 42,500, look here, out of 42,500, कैलसी लो हाथ में, कैलसी लो हाथ में, sir, 42,500 is the total amount payable for goods purchased by us. Out of 42,500 हमने सबसे पहला पेमेंट किया $8,000 माइनस करो, हमने दूसरा पेमेंट किया $9,000 माइनस करो, हमने तीसरा पेमेंट किया $14,500 माइनस करो. व्हाट इज द बैलेंस? अब करना क्या है? अब करना क्या है? होल्ड ऑन. $11,000 पेंडिंग है. So listen here now. Listen here. 31st March 2012. We'll leave two lines on both the sides. We'll do the valuation. To balance carried down. How many dollars are outstanding? $11,000 multiplied by, what is the date here? Closing date 31st March. 31st March का रेट क्या है? चेक करो. 48.75 is the rate on 31st of March. So we'll multiply by 48.75. अब आप अकाउंट टैली करने जाएंगे तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा. आपका अकाउंट टैली नहीं होगा, उसमें डिफरेंस आएगा. That difference will be transferred to. That difference will be transferred to which account? Profit and loss account, balancing figure. Because I have done the valuation, that difference will be there in this account. On the credit side, we have this much. On the debit side, we have this much. On the credit side, we have only one entry, 2. यहाँ पे आपका टोटल आएगा ये रहा. If you look carefully, the total doesn't match. That difference is nothing but the profit or loss on revaluation of the closing balance. Sir, as per the original transaction date, मेरा रेट क्या था? ट्रांजैक्शन रेट 48.50 था सर. मेरा ट्रांजैक्शन रेट था सर 48.50. बट ऑन 31st ऑफ मार्च हमने जो वैल्यूएशन किया है बेटा, वो हमने किया है 48.75. सर 48.50 से रेट बढ़ के 48.75 हो गया. तो 0.25 कम पे करना है, ज्यादा पे करना है? ज्यादा पे करना है. तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है. तो नुकसान है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पार्टी अकाउंट विल बी credited. I will pass the entry on the credit side. 31st March 2012 by foreign exchange fluctuation account. अमाउंट कहां से आया सर? $11,000 जो हमारा फॉरेन करेंसी में बैलेंस पेमेंट बाकी था, जो हमको पे करना था, उसका वैल्यूएशन किया हमने 48.75. बट एज द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डे रेट वाज 48.5. तो सर वो 25 पैसे का डिफरेंस आया. अब यहाँ पे आप देखो वही डिफरेंस बराबर एग्जैक्टली यहां से भी आएगा. 2,07,000 माइनस 2,06,250, 2,750. अब इनको मल्टीप्लाई करो. 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, सेम अमाउंट. दिस वे और दैट वे.
आंसर सेम आएगा। ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया टॉम ट्रेडिंग कंपनी का। फर्स्ट ईयर ऑफ टॉम ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोज। एनी क्वेरी स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? 31 मार्च का केस समझ में आया? टोटल दोनों से बाद में सेम लिखना, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2012, my balance brought down 5,36,250. As on 1st April, I have to receive I have to pay $11,000 at 48.75. अब इसका जब पेमेंट होगा, इसका पेमेंट कब हो रहा है सर? 15th अप्रैल को पेमेंट हो रहा है सर इसका। 15th अप्रैल को आई एम पेइंग द बैलेंस $11,000 एंड 15th अप्रैल का रेट है 48.60। 15th अप्रैल का रेट है 48.60। टू बैंक $11,000 multiplied by 48.60. $11,000 multiplied by 48.60। बच्चा लोग, हमने पेमेंट क्या रेट से किया? 48.60। सर 1 अप्रैल का दिन क्लोजिंग, अपना ओपनिंग बैलेंस के दिन हमारा लायबिलिटी क्या रेट से वैल्यूएशन किया था? 48.75। जो कि हमने पेमेंट क्या रेट से किया? 48.60। वी हैव पेड 15 पैसा लेस। लेस है तो फायदा है, फायदा है तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टी अकाउंट डेबिट होगा। चलो पार्टी अकाउंट डेबिट बोला है तो पार्टी अकाउंट में डेबिट साइड में लेते हैं। टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, डिफरेंस 11,000 मल्टीप्लाइड में कितना लेगा? 15 पैसा। आई थिंक 1650 आएगा। एंड अकाउंट विल टैली, अकाउंट टैली हो जाएगा सेकेंड ईयर का। That's it. I have prepared one account, that is Tom Trading Company account. You can prepare the second account, that is foreign exchange fluctuation account. वो तो काफी इजी है। इसका रिवर्स इफेक्ट आएगा, जहां जहां पे एफईएफ क्रेडिट किया उसका डेबिट में इफेक्ट आएगा, जहां जहां पे एफईएफ डेबिट किया उसका सेकंड इफेक्ट एफईएफ अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? शूट नाउ ऑल ऑफ यू फास्ट।